हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पेंडुलमएडू लर्नर्स। आप सभी का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर पेंडुलमएडू के बहुत बहुत स्वागत है। सो आई एम गोइंग टू बिगिन विद दिस एडिटोरियल सेशन दिस मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड it's amazing weather today this morning. And good morning only Pedia and Radha. Those who have joined me live, I would just request you all that you guys just comment and let me know and connect with me, and we're going to begin with this session. So yes, good morning everyone, good morning, great. So learners, whenever it rains heavily, we can use multiple phrases. One such common phrase is that it's raining cats and dogs. Like in SSC also you've been asked this idiom a lot many times. Okay, another phrase that you can use is it's raining monkeys, or it's raining bullfrogs. Okay, this is another phrase to tell that it's raining heavily. You can also say it's pouring, right? That's also it's raining heavily. Do not say that it's raining outside, because it never rains inside, right? So it's very obvious. Okay, so shall we begin with this session, guys? Quickly, guys. Yes, I want all of you to like and share the video. It is very, very important for me. It really means a lot to me. Okay, so that would be important. And let's begin with the article. The article for the day heads as growing precarity. Precarity is a noun that means danger. खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है on fuel prices and rising inflation. भाई fuel prices we all know, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जा रहा है, गैस का प्राइस बढ़ता जा रहा है, and there's rising inflation मतलब महंगाई जो है भाई वो बढ़ती जा रही है, जिससे कि हम सबके लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, right? Fuel levies must be cut to ease the burden. भाई सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है. Every individual, हम जैसे लोग, like हम जैसे मतलब भाई एक मिडिल मैन, कॉमन मैन जो है, वो सब इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि किस तरह से हम इन सारी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हमारे लिए कब खत्म होगी. या तो हमारी इनकम्स बढ़े, राइट, लेकिन जैसे इनकम बढ़ती है उतना ही प्राइस बढ़ जाता है चीज़ों का, तो चीज़ें का फायदा नहीं हो रहा, वो सब वहीं पर आके लेवल हो जाती है. गुड मॉर्निंग बेटा करिश्मा, गुड मॉर्निंग. अच्छा, it says that fuel levies must be cut to ease the burden on consumers reeling under rising inflation. Reeling under मतलब जो कि उसके अंदर fall कर रहे हैं या उसके अंडर हैं. अच्छा, कहते हैं कि आपको बर्डन, अगर बोझ कम करना है कंज्यूमर्स के ऊपर, तो आपको जो है ये जो फ्यूल जो बढ़ता जा रहा है, फ्यूल प्राइस, इसको कम करना पड़ेगा. इस पर हमें कट्स करने पड़ेंगे अगर हम बर्डन जो है कम करना चाहते हैं तो. The latest inflation data based on retail and wholesale prices are yet again flashing cautionary signals. Okay, are yet again flashing. Flashing means giving. अब देखो flashing क्या होता है? Making it prevalent, making it visible. अब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी की तरफ लाइट को फ्लैश कर रहे हो, आप उसकी अटेंशन चाह रहे हो, तो वही वो कर रहे हैं कि जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन हुआ है, जो इंक्रीमेंट हुआ है रिटेल और होलसेल प्राइसेस में, ये हमें कॉशनरी सिग्नल्स मतलब हमें हिंट दे रहे हैं, हमें आगाह कर रहे हैं. एज स्पाइरलिंग कॉस्ट, स्पाइरलिंग मतलब बढ़ता हुआ. ओके, इट्स अ वर्ब, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह आया हुआ है. टू बी इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ. तो ये जो स्पाइरलिंग कॉस्ट कंटिन्यू टू डॉग पैंडेमिक हिट इकोनॉमी. स्पाइरलिंग कॉस्ट, डॉग मतलब उसको हाउस कर लिया है, वो वही है, मतलब वो कहीं जा नहीं रहा, टस से मस नहीं हो रहा, डोमेस्टिक उसको पाल लिया, बढ़ता ही जा रहा है. कॉस्ट इज नॉट लोअरिंग, वो बढ़ता ही जा रहा है कॉस्ट. सो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक इशू बन सकती है, बन गई है. गुड मॉर्निंग बेटा राहुल, गुड मॉर्निंग.
कहने का मतलब ये है कि हम सब जो जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या हम स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम इन्फ्लेशन से बाहर आए, तो ये सब चीज़ों के जो भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दे हैव टू बी स्टेबलाइज, दे हैव टू गेट स्टेबलाइज. CPI based inflation stayed stuck above the RBI 6% upper bound for the second straight month, with June's provisional annualized 6.26% only a touch lower than the 6-month high base of 6.3 registered in May. तो ठीक है, 6.3 मई में था, 6.25 जो है जून के साथ था. ठीक है, तो अभी भी 6% हम ऊपर ही 6% के आप अबाव ही हैं. वैसे तो 4% से लो हो गया था इन्फ्लेशन. अब वापस से देखिएगा कितनी महंगाई जो है बढ़ती जा रही है. Inflation at the retail level was largely propelled by sharp increases in key food items, including oils and fats. ठीक है, largely propelled, largely observed, which surged almost 35% from a year earlier and gained 2.9% from May's level as also egg. भाई सबको पता है, जो लोग अंडा खाते हैं उनको तो पता ही होगा, जैसे कि मुझे आई नो भाई 6 रुपए से अंडा 8 रुपए का बिक रहा है, राइट. इट्स ठीक है, हमें लग रहा है कि ये सिर्फ 2 रुपए है, बट ऑल इन ऑल अगर आप देखें ऑन लार्ज स्केल, इट्स नॉट जस्ट 2 रुपीज. 6 रुपए का अंडा जो है अब वो 8 रुपए 9 रुपए का अंडा बिक रहा है. सो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, राइट. 35% सर्च था एक साल पहले से, अब कंपेयर किया जाए तो फूड आइटम्स, काफी सारे फूड आइटम्स हैं, जिसमें से कि एक एग है, which jumped 19.4% year on year and 6.2% from the preceding month, and the pulses and products which climbed 10% by from June 2020. बहुत ही ज्यादा. 19.4% हम एग की बात कर रहे हैं. पिछले मंथ से अगर कंपेयर करो, ये साल दर साल था 19.4%, पर हम पिछले मंथ से कंपेयर करें तो 6.2% ऑलरेडी महंगाई बढ़ गई है अंडे की, सिर्फ एग की. बताइए, ओनली पीडिया बता रहे हैं पेट्रोल 103 रुपए पर लीटर मिल रहा है. तो इट्स लाइक डे बाय डे, हर दिन कुछ ना कुछ, भले ही 0.1% राइज हो रहा है हर दिन, बट हर दिन महंगाई बढ़ रही है, राइट, विच इज अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस. The writer says that as RBI officials reviewing the state of the economy in the central bank's monthly bulletin released on Thursday observed, fuel inflation excludes petrol and diesel surged to a record of 12.7% in June, driven by LPG, kerosene, and the rural mainstays noun subject मुख्य आधार. वैसे तो मुख्य आधार कहते हैं, मुख्य लाइक प्राइम बेसिस, जिसके ऊपर रूरल जो लोग हैं वो उस पे जैसे टिके होते हैं. फायरवुड एंड डंग केक, ओ माय गॉड, इस पर भी सर्ज है. सोच लीजिए जरा, काव डंग से जो हम डंग केक बनाते हैं, जो उपले हम हिंदी में कहते हैं, वो हो गया, आपकी फायरवुड हो गई, इन सब पर भी सर्च है भाई, इन सब पर भी इंक्रीज हो रही है, इन पर भी महंगाई है. हाँ, अच्छा भाई, अब ये कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल को अगर एक्सक्लूड कर दें तो बाकी जो फ्यूल है उसमें भी 12.7% इंक्रीमेंट है. ठीक है, बहुत बड़ी बात है भाई. एंड डिस्कंसर्टिंगली मीन्स अनईजिली, कहते ना एक तरीके से, डिस्कंसर्टिंगली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इन अ रेस्टलेस मैनर, इन अ रेस्टलेस मैनर. एक होता है ना, एक शांत चित्त से जब आप नहीं होते हैं तो उसको हम डिस्कंसर्टिंगली कहते हैं. LPG and kerosene prices have also registered increase so far in July. Okay, transport costs remain persistently high. Persistently means consistently. लगातार, हिंदी में हम कहते हैं लगातार.
तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो लगातार हाई ही है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, दे कंटिन्यू टू राइज विद द फॉर्मर, नाउ एवरेजिंग 102.92। बिल्कुल जैसे कि अभी हमें विकिपीडिया ने भी कहा 103। बिल्कुल देखिए, ऑन एन एवरेज पेट्रोल हर जगह ऑन एन एवरेज कितने पे जा रहा है? इट इज गोइंग एज अ लीडर in the four major metros as on July 12, and diesel at almost 94 rupees. So we all know, if we talk of petrol, we talk of diesel, it is going at this price or at this pace. So we are aware of this amount. This is the average amount that we are talking about, but the average is equivalent to what we're talking about. In every city it is almost the same. It is plus 100, right? That's the value, that's the super value of this product, of these transport costs that we all are bearing now at present. According to the bulletin article, we've come to know about this. We all know about this as per the bulletin article from different news and different other channels. With global crude oil trending higher, the unabated rise. Unabated is an adjective which means uncontrolled or unrestricted, okay, which is not restricted or not controlled by anyone. Not restricted or not controlled, okay, जिस पर की कोई रोक नहीं है, जिस पर की कोई रोक नहीं है, that is an unabated rise in domestic transportation costs. It is bound to reflect in retail prices of farm produce and products shipped from factories. Okay, so it is going to reflect in all these retail prices that we tend to notice. अगर factory से भी आ रहा है, then also if you see, then the retail prices will also increase. If we see wholesale price, it affects the retail price. We all are aware of this. There is no question to that. Going ahead, learners here, फटाफट से मुझे बताएंगे if anyone is having any sort of confusion until here, or else I need to go ahead. Sagar, good morning beta, good morning. Quickly tell me if anybody is confused until here or any sort of doubt until here, or else I will be going ahead then. Quickly let me know, guys. Okay, no confusion. Only Pedia says no confusion. Alright, so let's go ahead. Wholesale price inflation also stays stubbornly high. Stubbornly is an adverb which means adamantly, strictly, कठोरता से, मतलब एक जिद्दी ढंग से वो हाई at 12.07% in June after May's record, that's 12.94%, as price gains in the fuel and power category soared 32.8% annually. साल भर में अगर हम फ्यूल और पावर कैटेगरी की बात करें तो 32.8% इन्फ्लेशन है उसमें, and those of manufactured product edged up to 10.88%. So जो manufacturing costs में जो manufacturing में लगते हैं उनमें आपको 10.88% rise देखने मिला है. Medium and small scale industry, that is MSMEs, okay, industrial units already struggling to cope with the pandemic's impact on demand and overall finances now face rising raw material and input costs. Okay, so अभी भी उनको raw material input costs face करना पड़ रहा है, which is जो कि हम बात करें जो कि growing industries है. ठीक है, we are not talking of the units which are well established already. We're talking about small scale industries which are trying themselves to establish, okay, with manufacturing activity contracting in June for the first time in 11 months. As per IHS Mark IT's PMI, the economy is visibly struggling to regain traction
Traction, that means, you know, it's struggling to regain importance or attraction. ठीक है, उनको वो वैल्यू चाहिए, वो उनको वो लोगों का अटेंशन चाहिए, एंड दैट इज लैकिंग सेकेंड वेव के चलते. ओके, विच हैज eroded, that means destroyed. It has eroded demand and consumption capacity in both urban and rural markets. Okay, so whether we talk of urban, whether we talk of rural markets, the demand has been completely destroyed. Okay, it has been disrupted. It is because of the second wave of the pandemic that we all had to face. Okay, it's nothing new there, but yes, we all had to actually face this. Now, and to this, the looming possibility, looming, that I'm going to write it here. Looming has been used here as an adjective. Okay, that means mandarana. Okay, to be there, to present there, या कहते हैं ना किसी जगह पे लिंगर करना या वहां होना. सो द लूमिंग पॉसिबिलिटी, या जो पॉसिबिलिटी या जो संभावना है, दैट दिस ईयर्स मॉनसून रेन्स मे बी लेस देन एडिक्वेट, either temporarily or spatially, disrupting agricultural output, and the outlook for both inflation and growth gets significantly clouded. Clouded, that is unclear. Adjective, अस्पष्ट. कह रहे हैं कि जैसे कि संभावना है या लग रहा है कि इस बार जो रेन होगी वो मतलब इट विल बी लेस देन एडिक्वेट, वो सफिशिएंट नहीं होगी जिससे कि जो फसलें हैं वो खराब होंगी. ठीक है, और जिसका परिणाम या जिसका जो आउटलुक या जो आउटपुट होगा वो पहले तो इन्फ्लेशन के लिए भी अस्पष्ट है, क्योंकि हो सकता है महंगाई दर फिर बढ़े. ठीक है, और जो हमारी ग्रोथ है कंट्री की, वो भी इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. सब कुछ अनक्लियर है, अस्पष्ट है. That's what writer wishes to say. Along with this, the writer adds that with cumulative rainfall since June 1 being 5% below average, 5% average से 5% कम रहा है, and 12 weather subdivisions spanning 37% of the country's area experiencing deficient rainfall as on July 15, and the pandemic still nowhere near under control, the risk of precarity and hardship rising in the rural hinterland. Hinterland क्या होते हैं? Outskirts को हम hinterland कहते हैं, जो कि it's a noun subject, जो कि जैसे हम देखते हैं जैसे ये मेन सिटी है और जो बाहर का एरिया है बॉर्डर पे या जो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे होता है उसको हम hinterland कहते हैं. ठीक है, जो ज्यादा डेवलप नहीं होता. इज वेरी रियल. जो रिस्क है खतरे का या जो डिफिकल्टीज हम फेस करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा रियल है. द गवर्नमेंट मस्ट एट द वेरी लीस्ट कट फ्यूल टैक्सेस टू ईज द बर्डन ऑन कंज्यूमर्स. दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, दैट वी हैव टू कट ऑन इन्फ्लेशन. That's the writer said in the headline as well, that we all have to work on cutting the inflation. We need to cut the inflation, right? We need that. That's very, very important as of now for all of us. Okay, so this is the entire thing that the writer wishes to tell us, wishes to inform us about. So I hope that the article is well understood by all of you. If anybody is confused or if anybody wants to ask anything, you guys can ask me right away. I will be addressing your queries and then we'll be going on to the top 5 words of the day. Quickly, only Vidya, Sagar, Rahul, Karishma, Anuradha. Kindly let me know if you guys are confused about anything. Okay, all right. There's no confusion as such.
चले आगे बढ़ सकते हैं. Proceed ahead. Okay, let's go ahead. So here are the top 5 words, learners. Looming was an adjective. Mainstay was noun. Unabated again adjective. Spatially was an adverb. Preceding adjective. I'm waiting for your responses. Quickly tell me. Yes, quickly tell me. Yes, looming is to mandrana, जिसको हम हिंदी में कहते हैं to be there at one place for long. बिल्कुल करेक्ट है, हिंदी में हम कहते हैं मंडराना. What about mainstay? Mainstay is the prime base. बिल्कुल. That's absolutely correct. Onlypedia. Others, those who are live, guys, you have to participate. All of you have to answer and respond to this. Uncontrolled. Unabated is uncontrolled. That's right. Preceding is previous. Spatially is related to space. Anything related to space or area, that's spatially. मतलब जैसे rain जो है वो spatially यहाँ पर जो word use किया गया था, that was for rain, area wise. Okay, to tell about area wise. So that's what spatially is, relating to space or area. Okay. So these are the top 5 words, guys. I hope it's well understood. Great, great. Going ahead, we have the next one. That's the error spotting from the editorial itself. The first one is the government must, at the very least, cut fuel taxes to ease the burden on consumers. बताएंगे quickly, guys. The government must, at the very least, cut fuel taxes to ease the burden on consumers. All right, Onlypedia, okay. Where is the error, guys? All of you. Others, guys, do not feel shy or do not worry about your answer going wrong. It's okay even if it goes wrong. I'm here to help you out. Onlypedia says B. That's very true because it should be cut. The government must at the very least cut the fuel. Yes. Why cut? Because it is given must. So must at the very least cut the fuel taxes to ease the burden on consumers. Model verb के बाद हम first form use करते हैं verb का, so it will be cut and not cut. That's right, Onlypedia, well said. Very good, that's the correct answer. What about the next one? The latest inflation data based on retail and wholesale prices is yet again flashing cautionary signals as spiraling costs continue to dog the pandemic hit economy. I'm sorry, excuse me. All right, Anuradha. Quickly. Here, if you see the inflation data based on retail and wholesale prices, तो ये plural form में use हुआ है, right? So it will be are yet again flashing. Are yet again flashing cautionary signals as spiraling costs continue to dog the pandemic hit economy. Yes, B is right. Onlypedia, that's correct. Option B, very good. Onlypedia, that's right.
What about third one? Medium and small scale industries already struggling to cope with pandemics. To cope with the pandemic's impact on demand and overall finances now face rising raw material input costs. बताएंगे. Quickly. What about the third one, guys? Exactly, there is nowhere in the sentence. It's absolutely correct. Why C only, Pedia? What's the error in C? Impact on demand and overall finances now face rising. No, it's fine. Rising raw material and input costs. It's fine. Only Pedia, there's no error. Now face rising, matlab बढ़ता हुआ. Okay. That's absolutely correct. There is no error in the sentence. It's option E. It's absolutely correct. So this is where the article for the day comes to an end, and this was the entire article with these vocabulary words and error sentences. Okay. Yes, only Pedia, we can use rise in the, but rising there is not incorrect. Okay. It's not sentence improvement. It is error spotting. So guys, the word list is given. The link is given in the description. Kindly visit and go through the word list. It's very important for all of us. Okay. So you need to go through this word list as well. All right, great. So I will see you again at 10 a.m. for SSC's practice session. Till then, keep learning and growing, guys, and not to forget to like and share the video. Thank you so much for joining in, learners, and I every day appreciate this from your end. Thank you so much. Thank you.